हम्म। कल्याण भाई राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं अपने बेटे को भी भाई भैया ही बोलती हूँ, मेरी आदत पड़ी है। बुरा मत मानना। थैंक यू लाइक करने के लिए। माँ शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। और हमारी बहन आ गई, सरगम बहन। कैसे हो आप सरगम बहन? डन किया है दीदी। हाँ, आपका लाइक आ गया। मेरे यहाँ खा के नींद लगने लगती है। अब खाना खा ली, खाने के बाद थोड़ी देर ऐसे चलता रहेगा, नींद आने लगती है। अच्छे हैं, अच्छा भैया, अच्छा कल्याण भैया। और बताओ। ससुराल है ना, इसलिए। खाना खा लो। खाना खा लिया भैया, खाना खा लिया। बता रही गांव आई हूँ इलाहाबाद। यहाँ खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद नींद लगने लगती है, और वहाँ पता नहीं 1-1 बजे तक जागती रहती थी। दो दी ऑन हूँ, खाना बना। हाँ हाँ ठीक है, आन रहो। और सुनाओ आप? मैं ठीक हूँ। सही है, मैं अपने घर आई हूँ ससुराल में। अब दिन होता तो दिखाती घर, मंदिर है दरवाजे पे, वो भी दिखाती। रात में कहाँ दिखाऊं। दिन में 3 से 5 लाइव करती थी, लेकिन अब यहाँ नहीं करती हूँ। कहाँ? इलाहाबाद में। मैं प्रयागराज है ना मेरा घर, इलाहाबाद। तो वही गांव आई हूँ, ससुराल में हूँ। आपको दिखाऊंगी कल। अब मंदिर 3 बजे लाइव ऑन करूंगी, आप देखना हमारी मंदिर। आप पूजा बहुत करते हैं। माता जी हर हर महादेव, हर हर महादेव बेटा, हर हर महादेव। सीताराम सीताराम। कैसे हो शिव शंकर बेटा? लाइक कर देना। और सुनाइए। लाइक डन। लाइक पता नहीं, लाइक आया नहीं बेटा, आ जाएगा, कोई बात नहीं। खाना तो बना लो ना सरगम बहन, खाना बना लो। घर के बाहर पोर्च बना है, वहीं बैठी हूँ, लाइट जल रही। माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। हाँ बेटा, सही बात है।
बेटे भी तो देखो अच्छे हैं, अच्छे को अच्छे ही मिलते हैं। और खाना खा लो सरगम बहन, खाना अच्छा बना रही हो, बना लो खा लो। आज तो मेरा कोई गाना भी नहीं है अपलोड करने को, बना ही नहीं हूँ। जो है माँ आपके सामने है। हाँ बेटा। और बताइए शिवम, खाना पीना हो गया? शिव शंकर भैया बेटा। कहते हैं दुनिया में माता से बढ़ के कोई नहीं, और कैसे तो है, दुनिया में माता से बढ़ के कोई नहीं। कितनी मुसीबत आई लेकिन मगर माँ रोई नहीं। हाँ माता जी। सही बात है। हाँ कहते, हाँ ऐसे ही कह रहे, हमारे पापा बोलते थे दुनिया में माता से बढ़ के कोई नहीं, सैकड़ों मुसीबत आई मगर माँ रोई नहीं। शिवरात्रि को जा रहे हैं बनारस जल डालने माता जी। अच्छा बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाओ, आपका मंगलमय यात्रा हो, यात्रा मंगलमय हो। और आप लोग तो भुला कर गई हैं। अरे दीदी मैं भूल नहीं गई हूँ, मैं किसी के लाइव में नहीं जा रही हूँ। आप कहीं भी देख लो, मुझे किसी के लाइव में दिखती हो, आप घर आऊँगी तो दिखूँगी। मैं किसी के लाइव में नहीं जाती, मेरे आँख में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, और मैं इस समय तो गाँव आई हूँ इलाहाबाद। मैं दिन शादी ब्याह पड़ा, मैं किसी के लाइव में नहीं जाती। दिन में रात में मैं 2 दिन से खोल लेती हूँ अपनी बस। आप आती थी हमारे यहाँ, मैं कभी नहीं भूलूंगी आपको। सबको पता है, वहाँ जिसके लाइव में जाते थे सबको पता है मेरे आँख में प्रॉब्लम हो गई थी, मैं इसलिए नहीं जाती थी। आप दीदी बुरा मत मानना। राम 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 राम। आप कैसी हैं? आप आती थी हमेशा हमारे यहाँ, मुझे पता है। मैं आपका पूरा साथ दूंगी, आ जाऊंगी तो। मेरे बता रही कि मेरे आँखों में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, फ़ोन ही नहीं छूती थी मैं पूरे दिन। मैं किसी की वीडियो नहीं देखती, देखो लो मेरा कोई नहीं देखता है इसीलिए, लेकिन मैं देखती नहीं। यहीं पर लेट जा माता जी, हम चले। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है।
कैसी हैं आप राजकुमारी जी? अच्छा, हमारी हरकेत बहन आ गई हैं। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं आई हूँ अपने घर ससुराल। शादी पड़ी थी और शिवरात्रि को थोड़ा कुछ करते हैं, मुझे भी पता था तभी तो मैं आ जाती थी। हाँ दीदी, मुझे पता है आप आती थी, हम भी आपका साथ देंगे, पूरा साथ देंगे। मैं भी अच्छी हूँ, बस अच्छी रहना चाहिए, अच्छा लगता है। किरण पटेल ऑफिशियल, नमस्ते दीदी, जय माता दी, राधे राधे, कैसी हो? किरण मैं ठीक हूँ, मैं क्या करूँ, मैं यहीं हूँ ना। इनका आपके भाई साहब को इधर उधर होने से थोड़ा सा तबीयत हो गई ना, सर्दी जुकाम, तो इसे डर लग रही है, इसलिए मैं कहीं जा ही नहीं रही हूँ, अब यहीं हूँ, घर पे हूँ अभी ससुराल में। मैं 8 को आऊँगी, घर आ जाऊँगी तो आपको बोलूँगी, आप 9 को आ जाना। 9 को तो मैं शाम को निकलूँगी, दिन में अगर 8 को समय से आ गई, लेकिन दोपहर के बाद ही आऊँगी। आना होगा तो आ जाना, रात रह जाना हमारे यहाँ, सच्ची बात बता रही हूँ। दीदी आपका खाना हो गया कि नहीं? हाँ खाना हो गया, अभी खाना खा के बैठी हूँ। राम 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 राम, बड़ी दीदी राम राम लिख रही हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम चलो, देख रही हूँ मैं, आवाज़ बंद किया है। अच्छा अच्छा, थैंक यू। अपनी हाल भी चाल रखे हूँ, अपनी एलबी चला कर रखे। अच्छा अच्छा दीदी, अच्छा ठीक है, मैं घर आऊँगी, आपका पूरा सपोर्ट करूँगी। अभी तक बता रही ना कि आँख के मारे मैं नहीं लाइव ही नहीं करती थी। दीदी आप भाई साहब को अच्छे से देखभाल कीजिए। हाँ वही तो थोड़ा से सर्दी जुकाम हो गया, अब मैं इसीलिए नहीं आ रही हूँ कि एक बार आऊँ, 8 तारीख को मुझे फिर यहाँ आना, निशान चढ़ाना, इसलिए नहीं आ रही। अब रुक के तब फिर मैं 8 को ही आऊँगी। राम 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 दीदी लिख रहे हैं, सरगम बहन हमारी इमोजी भेज रही हैं। राम 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 राम। दी न्यू फ्रेंड को भेज दो। अच्छा, न्यू फ्रेंड में कौन है? हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप हो? वो हरकेत बहन है वो। वो मतलब ऐसे ही आती है मेरे यहाँ,
अच्छा जी, चलती हूँ, फिर मिलेंगे। हाँ हरकत बहन, ठीक है। ये बहन ऐसे हमारे यहाँ आती हैं। और ये दीदी हैं, उर्मिला दीदी। किरण दीदी, आज आप बहुत अच्छी लग रही हो, कसम से। अच्छी लग रही हूँ। यहाँ आई हूँ ना घर पे, ससुराल में। तो यहाँ उसी तरीके बन के रहना पड़ता है बहन। राम 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 राम। हमारी माता जी सुन रही हैं, अभी कहेंगे क्या कर रही हो, सो जाओ। किरण बहन, अगर आप सरगम बेला बहन को आप फ्रेंड बना लो। सरगम बेला बहन यही है किरण बहन, जो हमारे पास आती हैं घर पे, यही है मेरी बहन। हाँ हाँ बहन, आप सुंदर लग रही। थैंक यू दीदी, थैंक यू। सुंदर सुंदर कहने के लिए थैंक यू। राम 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 राम। उस कमरे में गए पापा। इसमें नहीं लेटूंगी। नहीं है उसी में। कमर तो दर्द करता। अरे जा देखा सही से कर देना बिस्तर। हाँ बहन, आप सुंदर लग रही हो। दुल्हन बनी है। हाँ बस मैं ऐसे ही रहती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। ऐसे ही रहती हूँ, सिर पे रखती हूँ बस। अम्मा जी हैं, उनके सामने रहती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। 4 दिन का आए तो कोई कुछ कहे तो हम अपने तौर तरीके से ही रहती हूँ। कहने का मौका नहीं देती हूँ, नज़र ना लगे किसी की हमारी दीदी को। नहीं, मेरे नज़र नहीं लगती है, नज़र नहीं लगेगी। बहनों की कहीं नज़र लगेगी, आप बताओ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। किरण बहन, आप सरगम बेला बहन से न्यू हैं तो आप जुड़ जाइए। फ्रेंड बना लो। किरण बहन, अगर न्यू है ना तो आप जुड़ जाइए। उधर साफ तो है नहीं, साफ कर देते थोड़ा। कब तक आना है? 10 को आ जाऊंगी। अब अच्छा वैसे तो करंगा ही है नहीं कुछ लड़ाई बड़ाई वाला ना। अगर डिजाइन नहीं सही है दूसरा, लेकिन दबकर गरम या ठीक सही है। अरे भैया अंदर है ना? अंदर चल मैं नहीं करती। कहाँ है कि यहाँ? तू कहाँ पड़ेगी? कोशिश अच्छी
हाँ हाँ राम 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 राम। ये क्या है? ये क्या है? क्या है? नहीं नजर ना के करो लग जाए इस हुसन कोठी में ही के निगुआ निगुआ दुई चार गो मिर्ची लटका को चोटी में अच्छा समझ गई। राम 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 राम। हमारी माता जी बोल रही थी हम चली आई दूसरी जगह पीछे दूसरे कमरे में बैठ गई। राम 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 कहती सो जाओ क्या कर रही हो। राम राम उनके कि दिन भर बैठी रहती हो अब इतनी टाइम सो जाओ खा लिया तो। हर हर महादेव हर हर महादेव। दीदी लिख रही हैं नजर न के करो लग जाए इस हुसन कोठी में एक नीबुआ दो चार गो मिर्ची लटका लो चोटी में। वाह बहन बहुत सुंदर। राम 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 राम। बड़ी दीदी लिख रही हैं सरगम दीदी नमस्ते आपको सपोर्ट कर दिया। सरगम बहन आपको किरण पटेल ऑफिशियल बहन ने सपोर्ट कर दिया है। हर हर महादेव हर हर महादेव। राम 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 दीदी लिख रही हैं हर हर महादेव हर हर महादेव। हर हर महादेव हर हर महादेव। देखो ससुराल में रहने से ना थोड़ा सा ससुराल वाला लुक आ ही जाता है। अलग ही हो जाता है। हर हर महादेव हर हर महादेव। राम 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 राम। हर हर महादेव हर हर महादेव। राम 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 राम। सरगम बहन चेक कर लेना आपको किरण बहन सपोर्ट की हैं आप चेक कर लेना। राम 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 राम। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। नमस्ते दीदी जय माता दी जय माता दी। नमस्ते दीदी जय माता दी जय माता दी। किरण बहन वही किरण बहन हैं इनका दूसरा चैनल है। सरगम बहन किरण बहन का दूसरा चैनल है इस पे भी डालती हैं उस पे भी। हर हर महादेव हर हर महादेव। सरगम बेला बहन हर हर महादेव हर हर महादेव बहन लिख रही हैं। सरगम बेला बहन को इस पे भी सपोर्ट कर देना किरण बहन इस वाले से भी सपोर्ट कर देना। बहन का भी 2 चैनल है इनका मोनो है इसलिए नहीं जा सकती हैं। आप इस पे भी कर देना इस वाले से तो दोनों का आपको रिटर्न कर देंगी बहन। हर हर महादेव हर हर महादेव।
राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 दीदी, राम राम। थैंक यू दीदी। मैं चलती हूँ। हाँ दीदी ठीक है दीदी, राधे राधे, बाय, गुड नाइट। ओके, मिल गया। नहीं बहन अच्छी है, हमारे पास यही बहन आती हैं। अब आना था लेकिन अब मैं यहाँ हूँ। इनको थोड़ा सा इधर उधर घुमाना नहीं चाह रही हूँ। तबीयत तो देखो ख़राब थी ना, तो इस मारे अब मैं यहीं हूँ। अब घर यहाँ शिवरात्रि को कुछ करना है मंदिर पे, करके तब मैं घर जाऊँगी एक रात के लिए अपने घर। 9 तारीख को मेरा टिकट है आने का। अम्मा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भैया। अगर आप मेरे लिए न्यू हो तो आप ज्वाइन हो जाना, मैं आपको सपोर्ट कर दूंगी। विपिन कुल धन्यवाद अम्मा। हाँ हाँ, नहीं बेटा आप सच बता रही हूँ। आप अगर न्यू होंगे, अब मैं उन बहन को हंस रही हूँ, हंसने वाला है, उनका देख के हंस रही हूँ। आप न्यू होंगे तो आप सपोर्ट कर देना, फिर तो जुड़ जाऊंगी। अपनी एलवी चलाई हूँ। अच्छा दीदी ठीक है। आप कहाँ से? अम्मा आप कहाँ से? मैं तो भैया इलाहाबाद से हूँ। मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ से हूँ। अच्छा अच्छा भैया, अच्छा ठीक है। और आपका आपका क्या है? आप ब्लॉग बनाते हैं, क्या बनाते हैं विपिन भाई? क्या बनाते हैं आप? इलाहाबादी बिरयानी खिलाओगे हमें अम्मा जी? भैया मैं बिरयानी नहीं बना पाती हूँ। इलाहाबादी कौन सी बिरयानी है? ब्लॉग बनाते हैं हम। अच्छा, आप कहाँ से हो? विशाल कुमार। मैं इंडिया से हूँ, यूपी से। यूपी में मेरा घर है। जय श्री राम, जय श्री राम। इस वाले चैनल से पहले जुड़ चुकी हूँ। अच्छा अच्छा, कि पहले से जुड़ी हो? सरगम बहन इस वाले चैनल से बहन पहले से जुड़ी हैं, आपने देखा था? आज उस वाले से जुड़ गई हैं। और विपिन भाई आप न्यू हो तो आप किरण देहाती लोकगीत और सरगम बेला, इन दोनों लोग से जुड़ जाइए आप। आपको सपोर्ट कर देंगी कल 24 घंटे में। आंटी आप आंटी आप क्या लिखा है आपने? ओम प्रकाश। आंटी आप हिंदी में लिखिए, ज़्यादा लिखना है तो। सरगम बहन इमोजी डाल रही हैं। सरगम सिस्टर
आज वाले वीडियो पर कमेंट कर दी हूँ, आज वाले चैनल में। अच्छा, मैंने बोला आप अपनी आँखों को बुढ़ापे में क्यों तकलीफ दे रही हो, सही से तो पढ़ लो। अच्छा, हमारा बुढ़ापा है, हमारी आंखें बुढ़ा गई हैं। हमें नहीं आता सही से पढ़ने, इसलिए आंख में चश्मा लगाई हूँ। मैं अपनी आंख को तकलीफ नहीं दे रही हूँ। आपको तकलीफ हो तो आप रहने दीजिए कमेंट करने को। ओके किरण शीश जिंदाबाद, जिंदाबाद इलाहाबाद अम्मा जिंदाबाद। आप मेरी दादी की आपकी दादी की क्या उम्र है बताना भाई। आपकी दादी कितनी उम्र की हैं? अम्मा आपको देख के डर लग रही, कहीं थपिया न दो किसी को। हाय राम। मुझे जो उल्टा सीधा लिखे ना अगर पास में हो तो सचमुच ऐसे कुछ नहीं है। सारी अम्मा दादी बन गई हैं। दीदी मेरी आ गई 8 लाइक करके। थैंक यू दीदी। मेरी दादी ऊपर चली गई हैं, आपकी ऊपर चली जाओ। तू चला जा ऊपर, मैं क्यों जाऊं? कल के बजाय आज ही चला जा। कैसी हो राजकुमारी बहन? मैं ठीक हूँ दीदी। बहुत दिनों से आपका लाइव का इंतज़ार कर रही हूँ, दिखती नहीं है। मैं दीदी आई हूँ इलाहाबाद घर, इसलिए शादी वादी पड़ी थी तो नहीं करती थी। आज दिखाई आपकी। कहाँ चली गई थी? मैं इलाहाबाद आई हूँ दीदी, मेरे ससुराल में शादी थी तो मैं घर आई हूँ। प्रकाश भैया ऐसे किसी को नहीं बोलते जिस तरह आप बोल रहे हो। फिर क्यों दादी बना रहे हो? दादी जैसे हैं, चले जाओ यहाँ से। और किरण? राम 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 दीदी लिख रही हैं। राम 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 राम। राम 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 दीदी लिख रही हैं। और हमारे सरगम बहन राम 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 राम। ब्लू दे दो। अच्छा दीदी।
थैंक यू दीदी। राधे राधे दी, राधे राधे। आज मेरा गाना खत्म हो गया था, आ ही नहीं है अब कुछ डालने का ही पड़ा था तो वही डाल दी थी, डालना ही नहीं चाह रही थी उसे मैं। आवाज भी है ही नहीं है, कल क्या डालूंगी, यहाँ बना ही नहीं पा रही हूँ, घर से बना ही नहीं पाई कि बना के ले आती हूँ तो ना। चार्जर ले आऊँ तो चार्ज करूँ। शादी हो गई, हाँ दीदी हो गई। अरे बाप रे, चार्जर ले आऊँ तो चार्ज करूँ नहीं तो पता चला कि गया, ध्यान नहीं दिया मैंने। कैसे चार्ज करूं? दीदी जी जा रही हूँ। अच्छा किरण, अच्छा। सरगम सिस्टर राम 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 राम। कैसे चार्ज करूं, कहाँ? वहाँ है ना बोर्ड। वहीं बैठ के फिर कैसे करब? अरे चाची कमरों में ऐसे बगल ही बोर्डवा है, बेडक लगा वैसे ही बोर्ड लगा है। अच्छा अच्छा, इधर इस साइड? हाँ वो साइड ही, खिड़की की साइड ही ऐसे लगा दूँ अपन लाइब्रेरी में। हाँ सही। किरण सिस्टर राधे कृष्ण राधे कृष्ण। चार्जर मेरे ऐसे। ले बंद कर। अच्छा नेटवर्क हो गया। बंद कर। दीदी गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। दरवाजा बंद करूँगा मैं, नहीं आता। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पंख खाना हो गया दीदी? हाँ खाना हो गया। अरे बाप रे, एक मिनट। सब ठीक है गांव में? हाँ ठीक है। चार्ज नहीं हुआ है इसीलिए चार्ज में लगा रही हूँ। मैं कहीं बैठ के करती हूँ। कैसे लगाऊं?
लग ही नहीं रहा मेरे से, इसमें पता नहीं कौन सा बोर्ड है। थैंक यू दीदी। और अनीता बहन, कल मैं सो गई थी मैं उठ करके सो गई थी। बारात थी, नींद 3 तारीख को, तो रात भर सोई नहीं थी, दिन में भी नहीं सोई थी। थैंक यू बहन। अनीता आई हैं? आज नहीं नींद आ रही बाप रे, ठंडी लग रही, इसीलिए सिर पे डाली थी, कान ढका था। अंदर में तो भी यहाँ बहुत ठंडी है। अरे बाप रे। जय सिया राम, जय सिया राम। सरगम बहन है? कल आप लोग आए होंगे, मैं सो गई थी लगा के, बहुत तेज नींद आ रही थी, मैं आधा घंटा नहीं बैठ पाई थी। थैंक यू दीदी, बड़ी दीदी। और आप कैसे हैं? खाना पीना आपने खा लिया? जय सिया राम, जय सिया राम। आज अम्मा जी गाना बता रही थी उनका गाना टेप करी हूँ, कल लिखूंगी। मेरा कोई गाना ही नहीं डालने को सुबह, क्या करूँ। राधे राधे आदरणीय माता जी, चरण स्पर्श। खुश रहो बेटा, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। एक ये है कि देखो, आते हैं इतना सम्मान से बात करते। एक अभी आए थे कि बुढ़िया कब मरेगी तू, बता, यही करने हो लाइव में लिखने। तो कोई जानने वाले, मुझे पता है, जानबूझ के लिखते हैं। फेक आईडी बना बना के रखे हैं, तो ऐसे लिखते हैं। और सरगम बहन, खाना खा लिया ना? जी ऐसा आपसे, हाँ, ऐसे खिसका के देखो क्या लिखा है। एक लड़का आया था कोई, ऊपर चली जाओ, बुढ़िया कब मरेगी, फलाना ढकाना ऐसे लोग होते हैं दुनिया में। सुरेश बालवंत, सुरेश बालवंत। एक आप हो बेटा कि ऐसे बात बोलते हो अच्छे से। कैसे कैसे दुनिया में लोग हैं, आप खिसका के देखो ऊपर कैसे कैसे लिखा है। मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया था बाद में उसका। दीदी, दीदी आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ अनीता।
ठीक हूँ। अभी मैं यहीं अपने घर हूँ ससुराल में, अभी यहीं रहूँगी। मुझे 9 तारीख को आना है, 8 को यहाँ शिवरात्रि मना के फिर शाम को जाऊँगी मम्मी के यहाँ, रात भर रहूँगी। 9 का टिकट है आने का। अब की बार यहीं रहूँगी। घर पे बहुत दिन बाद रुकी हूँ। अच्छा आप आन हो, देख रही हूँ। थैंक यू दी। राम 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 बहन लिख रही हैं, अनीता बहन, सरगम बहन इमोजी दे रही हैं। आप लोग को बहुत बहुत से धन्यवाद जो मेरा साथ दे रहे हो यहाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा। हमारी माता जी संस्कार अपने परिवार से मिलते हैं। इनके माता पिता ने ऐसे ऐसे संस्कार दिए हैं। अब क्या करोगे बेटा, किसका किसको मुंह पकड़ोगे। ऐसे दुनिया में हम क्या करते हैं, हम पढ़ना ही बंद कर देते हैं। कुछ भी लिखो हम पढ़ते ही नहीं हैं। ना 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 ना, हाँ 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 हाँ, बताऊँ विंडो खोली हूँ कि नेटवर्क न जाए, इस मारे हवा लग रही है, ऐसे ढक रही हूँ। थोड़ी सी विंडो खोली हूँ और हवा चल रही। हमारे जिस दिन बारात थी बहुत बारिश हुई थी, 3 तारीख को। यस ओहो, यस अच्छा दे। हाँ विंडो थोड़ी सी खोली हूँ कि नेटवर्क ना जाए। कढ़ाई में खाए होंगे। पता नहीं, सही बता रही हूँ। बारात आके ऐसे जैसे बेचारों का इतना इतना सामान किए थे, कुछ नहीं चला। घोड़े ओड़े रेस लगाने का और जनरेटर, मतलब जितना होता है शादी में सारा सब किए थे, सब बेकार गया उनका पैसा। इतनी बारिश भयंकर बारिश। हम जब बारिश तो खाना खाने नहीं पाते थे, आदमी ढक देते थे खाने को तुरंत का तुरंत। जैसे जयमाल पे हम गए, अब लगा लो कि चप्पल उप्पल पानी से डूब जा रहा था। इस तरीके से हुआ था। यस आओ। कहने की बात है, मेरी शादी मई के महीने में हुई थी, 18 मई को। और हमारे द्वार 4 ओर हो गया। जब ब्याह बैठने की टाइम आई तो इतनी बारिश की, बाप रे, मंडप में पानी भर गया। घर के अंदर शादी हुई मेरी।
मई के महीने की बात है। आज तक हमें कहते हैं जब आते हो पानी लेके आते हो। बस थैंक यू बहन सब लोगों को। बारिश में दिक्कत हो गई, हाँ बहुत दिक्कत हो गई कि खाना भी गए जैसे लेने के लिए, बारिश होने लगे, जल्दी जल्दी बस खाना जो जितना ले पाई थोड़ा मोला लेके घर के अंदर भाग आई। तो हमारे लोग के इतना घर है कि जितने बाराती थे सबको ऊपर खाली थे, ऊपर गद्दा लगा दिए, सबको ऊपर पहुंचा दिए। घर तो बहुत है। जितना गेस्ट हाउस में कमरा मिलता होगा उतने घर हैं, कमरे हैं बहुत हैं। चारों ससुर को मिला करके, लेकिन एक ही जगह थे, एक ही घर में बहुत घर हैं। और अनीता सरगम बहन दोनों लोग आज आपस में बात नहीं कर रही हो, क्या बात है? बात करो ना। हाँ दीदी दोनों लोग बात करो। सरगम सिस्टर कहाँ हैं आप? आपके ऊपर है राम खाने से तर जाएगा, पार भाव से उतर जाएगा। हाँ बेटा। अनीता बहन बोल रही हैं जय श्री कृष्ण ठाकुर भैया। यस, कहो। यस यस हवा चल रही, खिड़की से हवा आ रही। जय श्री राधे, जय श्री राधे अनीता बहन।
सरगम सिस्टर चली गई क्या? सरगम सिस्टर गई नहीं होंगी, आन होंगी, ये मुझे पता है। क्या पता आन हो। यस हो। जय श्री श्याम बहन लिख रही हैं। और अनीता कैसे हो? बच्चे कैसे हैं? सरगम बहन है तो अनीता बहन कह रही है सरगम बहन चली गई क्या? दीदी कहाँ हो? ससुराल में? हाँ मैं ससुराल में हूँ। हमारी माता जी लेटी है। इसलिए कल रख के सो गई थी म्यूट करके। कहती कि सारे दिन जागती हो, रात में सो जाओ ना, क्या कर रही हो? बच्चे ठीक हैं? हाँ सब ठीक हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। खाना पीना हो गया होगा ना? ससुराल में हूँ। ठीक है। बेटी है ना। अम्मा कहाँ है? प्रणाम अम्मा जी। अम्मा जी हाँ। अम्मा जी हमारी कह रही सो जा। अम्मा जी आशीर्वाद दे रही हैं। कह रहे खुश रहो बेटा। मैं बताई वहीं से सुन रही हैं। कह रहे खुश रहो, सदा सुहागन रहो। कह रही सो जाओ ना, दिन भर जागती हो, रात में जाग रही हो, सो जाओ। अम्मा जी हमारी अच्छी हैं। सुबह गाना बता रही थी। रिकॉर्ड करी हूँ। मैंने कहा सही। मैं बहुत खुश हुई अम्मा जी। हाँ मैं बेड पे बैठी हूँ, उसी बेड पे आपके जीजा लेटे हैं। अम्मा जी बोली यहीं आओ। हम तीनों जब रहते हैं तो एक ही जगह रहते हैं। अम्मा जी भी, हम तीनों एक जगह रहते हैं। कोई मानेगा? सासू माँ भी हमारी, हम भी, ये भी तीनों हम एक जगह रहते हैं हमेशा। जब आती हूँ 2-4 दिन रहती हूँ तो अलग नहीं करती हूँ माँ को। अच्छा अम्मा जी लेटी हैं अपना। हमें कहती है कि अलग मत रहो। हम खुद ही नहीं अलग करते हैं उनको। 2-4 दिन रहते हैं तो उनको हम लेके तीनों एक जगह ही रहते हैं। खुश रहती हैं। आपके जीजा तो सो गए, खर्राटे ले रहे। अब यहाँ आए, थोड़ा सर्दी जुकाम इनके हो गई, हमारा डर सा लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ से फिर मम्मी के यहाँ नहीं गई। मैं कहीं इधर उधर नहीं होंगी। थैंक यू सरगम बहन। सचमुच यहाँ ना हूँ दी। यहाँ अच्छा, यहाँ आके ना सही सही खाना खाते ही पता नहीं नींद लगने लगती है कि सो जाऊं। बहुत जबरदस्त नींद लग रही है, लेकिन मैं जबरदस्ती जग रही हूँ। थोड़ी देर करूँगी, अभी 11 बजे तक तो करूँगी, क्योंकि वीडियो भी नहीं डाली हूँ।
कल तो उसको मैं डालना नहीं चाह रही थी, लेकिन मजबूरी में मैंने डाला आज उसको। ध्यान रखो दी आप। हाँ, इसीलिए बहन मैं घर नहीं जा रही हूँ, एक जगह हूँ यहीं पर। ध्यान रखो दी आप। हाँ, ध्यान तो है ही है बहन। हर हर गंगे, हर हर गंगे नहीं तो बहन लिख रही हैं। जय 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 श्री राधे। पता नहीं, मैं घर आती हूँ मुझे 2 ही 4 दिन में पता लगता मैं मोटी हो रही हूँ। पता नहीं क्यों ऐसे होता है, सचमुच हो जाती हूँ। दीदी खाने वाली आ गई। अच्छा अच्छा, हाँ, खा लीजिए, खा लीजिए अनीता। आन हूँ। अच्छा दीदी, अच्छा अच्छा, सही कहा दीदी। हाँ देखो, मैं सचमुच लग नहीं रही हूँ। लग रहा है। हाँ, मैं यहाँ पता नहीं क्यों मोटी होने लगती हूँ। ऐसा देखो, वहाँ रहती हूँ ना, सारे सिर पे चिंता रहती है। यहाँ आती हूँ चिंता मुक्त हो जाती हूँ, कोई चिंता नहीं रहती है। खाना पीना भी बेटी है बनाती है, सारा काम करती है, कुछ काम नहीं करना पड़ता है। बैठे 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 जब वो होने लगती है तो घूमने चली जाती हूँ। कि घूम के आ रहे हो, थोड़ा चले। हमारे देवर कहते हैं कि बैठी न रहो, जाओ थोड़ा चल के आओ। कैसी हो दीदी? नमस्ते। नमस्ते किरण बहन, शशि बहन। मैं सही हूँ, आप बताओ। काम कोई करने नहीं देता, ये बात है। हमारी अम्मा जी यहाँ भी नहीं करने देती हैं, कहती रहने दो, थोड़े दिन हो रहने दो। वहाँ तो करती हो। खाने पे आइटम चलता रहता है। सारी चीज़ बनवाती रहती हैं। जा रही हूँ दीदी खाना। हाँ, खा लो नीता।
हवा से। संध्या अजय यादव, अरे बहन बहुत दिन बाद आई बहन, बहुत अच्छा लगा। संध्या बहन, राधे 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 बहन। कैसे संध्या बहन? बहुत अच्छा लगा संध्या बहन। संध्या बहन कैसे हो? बारह लाइक, थैंक यू विवेक भैया। बेटा भैया विवेक कैसे हो? मेरा ना यहाँ मैं यहाँ आके कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, वीडियो भी नहीं डाल पाई। आज तो डाली हूँ, अब कल के लिए कुछ है ही नहीं है। मैं आऊँगी 9 को बैठूँगी, 10 को आऊँगी। कैसे हो विवेक भैया? लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं दीदी, आप देखते रहना। बताऊँ ससुराल में हूँ मैं, यहाँ ना वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। शादी पड़ी थी, लोग हैं ना, तो इसलिए बनाती नहीं हूँ। अब मम्मी घर जाती थी तो वहाँ बना लेती थी, इसलिए लाइव थोड़ा खोल ली कि उसको नहीं बनाई हूँ, वीडियो नहीं बनाई हूँ तो चल जाए। आपके जो बोली थी वो कर दिया है मैंने दीदी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है विवेक भैया, थैंक यू, बहुत बहुत से धन्यवाद। मैं आऊँगी तो फिर करूँगी। देखो यहाँ नेट नहीं चल रहा ना, गोल गोल घूमने लगता है, यही मुझे प्रॉब्लम है यहाँ। आप अच्छे से चेक कर लेना तो दीदी। नहीं नहीं है, आया है। आया है, मेरा बेटा भी करता है।
मेरा बेटा भी वहाँ से साथ दे रहा। आया है भैया विवेक भाई, मुझे पक्का विश्वास है। आप मेरे पर करो, मैं करती हूँ पूरा पक्का। क्योंकि मैं यहाँ कुछ कर नहीं रही हूँ ना मेरे, लेकिन फिर भी मेरा सपोर्ट है भैया। ऐसे बनाए रखो बस 9 तारीख तक। कल कर दिया था। अच्छा अच्छा, आज भी कर दे, आज भी कर देना भैया। आया है। दो घंटा 53 मिनट का दोनों फाइल से सेट कर दिया था, परसों दे दिया। अच्छा अच्छा, हाँ देखा था मैंने। बस और कल 4 घंटा कर दिया है दीदी। क्या था? रात में शायद लाइव किया था, क्या करके छोड़ दिया था। अच्छा दीदी हैं अभी? दीदी आपकी लाइव चल रही है? दूसरी वाली चल रही होगी। मैं 4 बजे उठकर और सोता हूँ। प्रेस कर बाद
अच्छा अच्छा, राम राम। ठीक है बहन, मैं भी चलती हूँ, लाइव का टाइम हो रहा है। अच्छा दीदी, ठीक है ठीक है। हाँ, आपके लाइव का टाइम हो रहा है। अच्छा दीदी, आगे लाइक करना। थैंक यू दीदी। मैं जा रही हूँ बहन, लाइव का टाइम हो रहा है। दीदी बाय बाय। बाय 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 बाय। मुझे पता है। दीदी नमस्ते, कैसी हैं शिखा बहन? मैं ठीक हूँ शिखा बहन। और आप बताओ, आप कैसी हैं? मैं आई हूँ इलाहाबाद, ससुराल में मेरे शादी थी। वीडियो ही नहीं डाल पा रही बहन, नहीं आज बना पाई। मैंने कहा थोड़ी देर लाइव कर लेती हूँ। हमारे यहाँ बहुत ठंडी पड़ रही है। हमारे 3 तारीख को बारात थी, बहुत बारिश हुई थी। व्यूज 131 है और 4 घंटा 58 वाला एक मोबाइल से कर दिया था दीदी। अच्छा अच्छा। और हमारी बहन आ गई सरगम। किसकी शादी है दीदी? शादी हो गई, हमारे देवर की बेटी की थी। देवर की बेटी की शादी मैं गई थी, आन थी। हाँ मुझे पता है आप आन थी। मुझे पता है। शिखा बहन, सरगम बेला बहन को जोड़ लीजिए। बहन का चैनल मोनो है। आपको रिटर्न दे देंगे कल पक्का। अगर कहो तो ब्लू दे दूंगी। बर्तन का अच्छा अच्छा, बर्तन करने चली गई थी। देख रही हूँ आंखों में नींद भर रही है।
सो जाओ दी, लाइव चलने दो। हाँ चलने दूंगी, अभी बैठी हूँ थोड़ी देर, बाकी सो जाऊंगी। माता जी हमारे सो रही हैं, थोड़ी देर में अभी फिर उठ जाएंगे तो फिर कहेंगे नींद नहीं आ रही। अभी तो खुद सो गई हैं। आप क्रोम से चेक नहीं तो सदा तो आपसे देखिए कर दे। हाँ विवेक भाई, विश्वास है। ठीक है दी, शादी का वीडियो क्यों नहीं डाली हो? अरे बारिश हो रही थी मैं बना ही नहीं पाई हूँ। थोड़ा बना है, कल डालूंगी। कल डालूंगी, वीडियो नहीं बना पाई हूँ ना, तो कल डालूंगी। बेटी ने दूसरे मोबाइल से किया था, आज मेरे में ट्रांसफ़र किया है, कल डालूंगी। शादी के वीडियो कल डालूंगी, क्योंकि मेरे पास कोई गाना नहीं है ना। आधी तूफान वाली शादी, हाँ आधी तूफान बारिश वाली। आधी तूफान बारिश वाली। मैं हूँ नहीं बोलूँ रहा हूँ दीदी। अच्छा मैं तो सही से चेक होता है करके बता रहा था। अच्छा अच्छा, विवेक भाई अपने ट्रेन दौड़ा दो भाई। विवेक भाई अपने ट्रेन दौड़ा दो। अभी अपने लाइव ऑन करके धन्यवाद दिया नहीं दीदी। अच्छा, किसी का आवाज़ आ रही है? किस चीज़ की आवाज़? कहीं गाना चल रहा है, मैं म्यूट कर रही हूँ।
कैमरा पीछे पर करके देख रही हूँ। थैंक यू। मेरे ही मोबाइल से डेटा लिया हूँ। अच्छा, मेरे ही मोबाइल से। ठीक है, ठीक है। अभी हिंदी में लिखा करो। अभी मनीषा के मोबाइल से अपने ही से चला रहा हूँ दीदी। तो लैपटॉप में लोग ना ठीक से नहीं चल पाएगा दीदी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। मेरा मोबाइल से ठीक से कमेंट होता है, सेम ठीक से कम भी नहीं करता है। अच्छा अच्छा, और सरगम है। अभी मनीषा के मोबाइल से चला रहा हूँ दीदी। अच्छा अच्छा, देख रही हूँ, देख रही हूँ। कैमरा पीछे करके लेट गई हूँ। देख रही हूँ। गौरा घूम रही पर्वत पे शिव को पति बनाने को। ना चाहिए मुझे। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू। मैं देख रही हूँ।
मैं जल्दी वाई वाई का सोच रहा हूँ दीदी। अच्छा अच्छा, मैं जल्दी वाइफ लेने का सोच रहा हूँ। वाईफाई, अच्छा अच्छा। वाईफाई दीदी, हाँ वाईफाई लगवा लो तो सही रहेगा। ये काम बिना वाईफाई के नहीं सही होता है। अब यही तो मैं घर आई हूँ, देखो कितना परेशान हो रही हूँ। जरा से रखती हूँ बस बंद होने लगा है। थैंक यू भैया। थैंक यू थैंक यू। मैं सोच रहा हूँ दीदी का पूरा हो गया तो मेरा भी जल्दी होगा। हाँ विवेक भाई, एकदम आप सही सोच रहे हो।
मेरा पूरा हो जाएगा तो 100%। मैं सोचता हूँ इसका मोबाइल बहुत स्लो ही दीदी, लिखने में दिक्कत होता है। और हमारे मोबाइल आ गई हैं लाइक करके। थैंक यू मोबाइल, लाइक करके। अब मैं म्यूट करके रख रही हूँ।
लाइक को बढ़ा दो क्या दीदी, बढ़ा दो। अभी आई नहीं है, लाइक आ जाएगी। 14 लाइक है बस, 15 में नहीं आया है। चलो म्यूट करके रखूँगी। आ गया 15 लाइक।
नीरज बहन आई हैं। जय श्री राम। नीरज बहन, मैं इलाहाबाद आई हूँ। मेरा नेट बहुत कम चलता है दिन में, इसलिए मैं लाइव में नहीं जा पाती हूँ। किसी के वीडियो देख रही हूँ किसी तरीके से। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नहीं, अभी लाइक ही क्रोम के कमहर से हो दीदी। कैसी हो दीदी? मैं ठीक हूँ बहन। नीरज चौधरी, जय श्री राम, जय श्री राम। नीरज चौधरी को अरे यहाँ से छूट गया। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव बहन, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री राम, जय श्री राम।
अच्छा देख रहे हूँ। राधे राधे। थैंक यू विवेक। थैंक यू बहन। थैंक यू सरगम बहन। देख रही हूँ। थैंक यू बहन। ठीक से नेट ही नहीं चल रहा। बीच बीच में मेरे नींद आ जाती है। फोन छूट जाता है। देख रही हूँ।
थैंक यू। थैंक यू बहन, देख रही हूँ। मैं म्यूट कर रही हूँ, यहाँ कुछ बज रहा है, आवाज़ जा रही होगी। सर जी का जरा अच्छा अच्छा। आप सो जाओ, आप सो जाओ, मैं ओके। अच्छा ठीक है। म्यूट कर दे रही हूँ, मैं जग रही हूँ लेकिन म्यूट कर रही हूँ। थैंक यू बहन, थैंक यू। मैं म्यूट कर रही हूँ, मैं जग रही हूँ।
थैंक यू बहन, थैंक यू। अच्छा विवेक भाई हैं, विवेक भी आ गए हैं। मैं म्यूट कर रही हूँ। मैं म्यूट करी हूँ, बस देख रही हूँ। थैंक यू बहन, दोनों लोग थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक यू। मैं म्यूट कर रही हूँ। सो रहे, खर्राटे ले रहे, एक बाजा चल रहा।